All right. So over to you, Pratik. Yeah. Uh, Good evening, all of you. Good evening. I would like to thank you, KD and LLC team, to give the opportunity to present the view on the movie. And a big thank you to Akshay for helping in the PowerPoint presentation and preparing the deck. So moving ahead to the next slide, giving some introduction of the movie. Uh, the director Semit Amin is one of the good director. We had a good movie right now. Before this was the Rocket Singh. Movie was the same director. The movie Rocket Singh has been done by him only in 2009 and the Chak India in 2007. The producer Aditya Gupta, Aditya Chopra has done many good movies like Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge, Mohabbatein, Rab Ne Bana Di Jodi, Befikre. So the producer has also good records of the movie producing. There are the casting actors which already have been listed. I'm just going somewhat ahead so that we can take more things. This movie was released on 10th August 2007. Movie tenure is 149 minutes, and its budget was 200 million. Akshay, next slide, please. So these are the characters. The slide already contains the name of the actor and the character both. So there was in this movie, main role is of Shah Rukh Khan, who is a coach of Indian women hockey team, and the rest are the team members along with their original character name and the actor name. So this is just to give the connect the movie with the names and the things. Going ahead, this movie has got many awards. So Chak India has awarded with the National Film Award for the best popular providing wholesome entertainment. It was taken in the Independence Day Film Festival. So this movie has inspired a lot of things. So he has been there in the Independence Day Film Festival also, and it was a part of the Indian Director Film Festival and Minister of Defense for the 17th Independence Day. So this is the where the movie has gained many things. Going to the next, coming to the storyline, how this movie goes. So movie starts. It is good. I can go with Hindi, Gujarati, and English. So, agar if somebody want, I can switch the हाँ language. full on. Hindi Gujarati is always better. Okay. So ये मूवी में जब स्टार्ट होती है, ये मूवी स्टार्ट व्हेन दिस ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो द सीन गोज विद देयर इज अ इंडिया एंड पाकिस्तान द फाइनल मैच ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम इन द दिल्ली इटसेल्फ, वेयर जहां ऑलरेडी पाकिस्तान 1-0 से गोल आगे लीड करते हैं, एंड बेसिकली इंडियन टीम चेस कर रहे होते हैं टू विन द गोल, टू विन हैव वन गोल, बट समहाउ दे वर नॉट एबल टू मैनेज. एंड शाहरुख खान, जो that point of time he was the captain of Indian hockey team, उनको एक penalty shootout मिलता है. So he personally takes the decision कि भी मैं एक penalty shootout मैं लेता हूँ. So he tried his best. इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कुछ नहीं था, उनको गोल ही करना था, पर वो गोल मिस हो गया. That was a sportsman spirit where he just greeted to the Pakistan team member, Pakistan captain, and the media उन्हें उसको कुछ अलग ही पिक्चर दिखा दिया. देन कबीर खान, जो शाहरुख खान है, जो रोल कर रहा है पिक्चर में, उसको बॉयकआउट हो जाना पड़ता है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, उसको अपना मोहल्ला पूरा छोड़ के चले जाना पड़ता है. मूवी जब आगे जाती है, देन इट कम्स आफ्टर 7 years आफ्टर दैट इंसिडेंट. इंडिया पाकिस्तान इंडियन हॉकी फाइनल टीम का 7 साल के बाद का सीन आ जाता है, जहां एक हॉकी स्टेडियम में पैनल डिसाइड करती है कि कोच कौन रहेगा इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का, क्योंकि देयर इज हेडिंग, वो लोग इंडियन वुमेन्स हॉकी को फाइनल वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन में लेके जाने की बात करते होते हैं. तो देयर इज जहां कबीर खान का नाम आता है कि ही कैन बी अ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम. तो पैनल के पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्सन आया था, उनको अप्रोच कर रहा है, पर वो बोले और कुछ है नहीं, और कबीर खान ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया था, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं आ रहा हूँ. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जहां पैनल को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं एक विजन के साथ आया हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज है. सो ये 7 साल के अंदर इसने अपने खुद का होमवर्क किया था कि कौन उनकी टीम में रहेगा, कौन अच्छे प्लेयर्स है. सो वो कबीर खान ने 7 साल इन्वेस्ट किए थे.
फिर पैनल ने बोला ठीक है, आपको एक चांस देते, यू कैन बिकम द कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम। एंड देन देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, जो 16 हॉकी प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आते हैं, दिल्ली में रिपोर्ट करते हैं हॉकी टीम स्टेडियम पे। बट दे आर डिफरेंट, टिपिकल। लेट्स से आई विल टेक वन और टू एग्जांपल। जैसे कोमल चौटाला हरियाणा से आती है, तो एक सीन दिखाते हैं, उसके फादर बोलते हैं भाई एक टाइम तू, तेरे को एक चांस दे रहा हूँ, यहाँ तक आया है, अगर कर ले, अदरवाइज तेरे को बेलन घर चलाना है, चूल्हा चलाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है यहाँ तक आया है तो उनको एक मौका देते हैं। सो देर आर, दैट इज वन गुड इमोशनल पॉइंट कि भाई एक मौका तो दो उनको, यहाँ तक आया है तो। सेकंड थे फ्रॉम मिजोरम एंड मणिपुर, द हॉकी प्लेयर आते हैं, देन दे फेस द क्रिटिसिज्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो दे आर सैड मोमेंट। वो बोले अपने देश में हमने को एज अ गेस्ट माना जा रहा है, दिस वन ऑफ द नॉट गुड थिंग। देन ऑल द 16 मेंबर्स वर गिविंग द इंट्रोडक्शन सेशन। तो कबीर खान को पूछता है कि आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सब प्लेयर अपना नाम बोलते हैं एंड दे कम फ्रॉम द स्टेट। तो कोई गुजरात, कोई स्टेट से आ रहा है, कोई रेलवे से आ रहा है। तो कबीर खान बोलते नहीं, यहाँ इंडियन हॉकी टीम का हो रहा है, आई डोंट वांट टू लिसन सच थिंग। अगर आप पहले इंडिया के लिए खोलोगे देन ओनली इट इज द थिंग, तो ये आपको एक गोल मिलेगा। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस कि भी आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, कोई स्टेट के लिए या किसी रेलवेज के लिए, कंपनी के लिए नहीं खेल रहे हो। सो दैट वाज द थिंग्स, द मूवी वाज गोइंग अहेड। देन एज अगर वो एक ट्रेनिंग सेशन था, तो उन्होंने ट्रेनिंग कैंप था, तो उन्होंने सब अरेंजमेंट करके रखा था कि भाई ये प्लेयर इनके साथ ही रहेगा, ये प्लेयर इनके साथ रहेगा। बट दिस वाज इनिशियल चैलेंजेस जो उनको फेस करना पड़ता है। भाई सीनियर मेंबर्स बोलते नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। एंड देयर वर इंटरनल फाइट्स आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली जो सीनियर मेंबर रहते हैं वो ग्रुप वाइज देना चाहते हैं, स्टेट वाइज देना चाहते हैं, 3 मेंबर 2 मेंबर। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कबीर खान को पता है कि अगर ये स्टेट वाइज रहेंगे तो वो टीम होके नहीं बन पाएंगे। तो उसने बोला कि कृष्णा जी है, शी इज अ केयर टेकर, कि भाई इनको बोलोगे जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन मूव आउट ऑफ द इंडियन टीम। सो इन दैट केस दे वर गिवन उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट देयर वर बिंदिया नायक जो एक सीनियर टीम मेंबर थी, शी वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जूनियर, जो इज नॉर्मल, कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल challenges were there। कबीर खान अपने आप को संभाल रहे थे, they were he was trying to teach them, वो ट्रेनिंग कर रहे थे। कबीर खान को कबीर खान को पता है कि अगर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की क्या कमजोरी है, उनको स्ट्रेंथ चाहिए था, उनको एक पोटेंशियल चाहिए था। तो ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड दैट बाय गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग, creating a strategies, all the things। but due to this was something beyond their comfort zone, तो टीम ने उनको बॉयकॉट किया। टीम बोलेगा भाई हम लोग को इतना हार नहीं होना चाहिए। एंड देन दे से कि भाई कबीर खान शुड नॉट बी आवर कोच। तो उन्होंने पूरा एक वोट आउट करवाया एंड दे गिवन टू एसोसिएशन कि भाई वी डोंट वांट कबीर खान एज आवर कोच। तो कबीर खान ने बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स इफ यू वांट टू डोंट वांट टू बी आई विल गो आउट। फिर वो लोग एक जगह डिनर मॉर्निंग लंच के लिए जाते हैं। देन द इंसिडेंट हैपेंड, एक ऑफ द टीम मेंबर को सराउंडिंग लोकल बॉयज ने उनको छेड़ा था। एंड देन सडनली ऑल द गर्ल्स बिकेम अ स्ट्रेंथ। जो मुट्ठी, सॉरी कोई, नहीं, तो go ahead। तो वो जो खुली सब अलग अलग थे, एक मुट्ठी हो गया। देन दिस बिकम्स अ स्ट्रेंथ। तो उन्होंने चेस किया द लोकल बॉयज को और उनको पूरा आंसर दिया कि भाई यार स्ट्रेंथ। तो वहां से एक आता है कि फॉर अ टीम दैट शुड बी अ स्पिरिट, नियत होनी चाहिए, ताकत नहीं। तो यहाँ दे केम बैक। द होल मूवी ऑफ सेकंड पार्ट कम्स फ्रॉम हियर, बिकॉज सब लड़कियां हैज नोन के भी हम लोग अकेले, हम लोग एक्सपर्ट है, अकेले भाग सकते हैं फास्ट पर लंबा नहीं जा सकते। दैट दिस इज वन ऑफ द लर्निंग सेशन, वो आगे आएगा गोइंग टू द मूवी अगेन। सो इसके बाद होता है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो मेंस हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाले थे, देयर वर नोबडी फॉर द वुमेन्स हॉकी टीम। तो कबीर खान ने बोला लेट्स एग्जांपल हम एक मैच कर लेते हैं, जो वर्थी होंगे दे विल बी गोइंग अहेड। सो इन दैट केस इंडिया मेन वीमेन की मैच होती है, विच इज नन, दिस इज नॉट अ नेचुरल, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द बॉक्स। तो भी ये हुआ एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय मेंस टीम के, हाँ दे हैव गिवन गुड लीड। एंड देन
the selection ने बोला कमिटी ओके द वुमेन्स हॉकी टीम कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया वेयर जो अपना वर्ल्ड कप चलने वाला है हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है द टीम हैज बीन सिलेक्टेड ड्यूरिंग दैट सेशन अभी टीम तो हो गई सिलेक्ट टीम को फाइनल भी कर दिया पर लीड कौन करेगा बिकॉज अ कैप्टन जो लीड करता है टीम को दैट इज वन ऑफ द गुड फैक्टर होता है टीम को सक्सेस लाने के लिए तो द गोली वॉज गोली को कैप्टन बनाते हैं तो सीनियर बोलती है कि भाई मैं क्यों नहीं तो थोड़ा फेज होता है कबीर खान को उनको चैलेंजेस आते रहते हैं बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप पहली मैच थी उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बहुत बुरी तरह से हारे थे उनको ऐसा लग रहा था हम लोग अच्छी टीम है वी आर अ ग्रेट but when they started the first match with Australia, which was the previous world champion, they lost first match by 7-0. So बहुत बुरी तरह आ रहे थे there are multiple reasons there was no coordination दूसरा पॉइंट था कि जो कोमल बोले मैं खुद गोल करूंगी और प्रीति बोले मैं खुद गोल करूंगी दिस ऑल वर नोटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन कोच ये लोग नोट कर रहे थे कि सामने वाला क्या कर रहा है कैसे खेल रहा है तो दिस इज वन ऑफ द थिंग भले आप वो पावरफुल था they were the previous world champions still they were trying to strategize the each match every half an hour unko naya strategy aa rahe the they were doing both the ways so this is one of the key point कि भाई भले आप चैंपियंस है पर अगर वो मैच में आपको कुछ लीड करना है कीप कांस्टेंट ट्राइंग कीप वाचिंग कीप एनालाइजिंग द थिंग तो फर्स्ट मैच तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट था वो हार गए थे but next match they could able to manage after the good mentor by Kabir Khan उनका good built up हुआ strategize हुआ they wanted to they are winning second game third game fourth game एक टाइम पे वो सेमीफाइनल पे पहुंच गए थे सो सेमीफाइनल कोरिया की टीम के साथ था कोरिया की टीम बहुत स्ट्रांग थी उनके एक स्ट्रेटेजी रख के खेल रहे थे मैन टू मैन मार्किंग करके खेल रहे थे यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैन टू मैन मार्किंग में वो और कंपोनेंट प्लेयर को मूव नहीं करने देते सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी पर ये कैसे एनालाइज हुआ कबीर खान ने अगले दिन मैच का एक दिन पहले बिफोर दैट नाइट उसे एनालाइज किया कि भाई कोरिया की टीम पूरी वर्ल्ड कप के दौरान दे वर प्लेइंग मैन टू मैन यानी वो किसी भी कंपोनेंट टीम को बॉल तक आने ही नहीं देते थे सो ये स्ट्रेटजी उनको पता चल गई पर उनको पता है कि इसके लिए भी एक सीनियर प्लेयर चाहिए जो उनकी टीम में था विच वॉज ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप उनको उन्होंने नहीं खेला था बिंदिया नायक ने बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम द कैप्टन वो पूरा अलग एक तो वो बिंदिया को बताता है कि भाई बिंदिया यू आर कंफर्टेबल एंड सीनियर मेंबर यू नो हाउ टू ब्रेक दिस चैनल और अभी आपकी टीम को जरूर है तो दिस इज लाइक स्टार्परिंग द एज अगर आपके पास रिसोर्सेज है पर कब यूज करना कब परफेक्ट टाइम पे यूज करना पूरे वर्ल्ड कप के मैच के एक से आई थिंक 6 या 7 मैच थी उसमें बिंदिया नायक कहीं भी उन्होंने ग्राउंड पे नहीं उतारा था उनको बट ड्यूरिंग दिस मैच दे नो कि शी इज अ स्ट्रांग प्लेयर तो वो और बिंदिया लाखान या फॉरगॉट द फर्स्ट नेम उन्होंने तोड़ के एक 1-0 से कोरिया के सामने जिताया था सेमीफाइनल तो दिस वाज द थिंग ये जा रहा था आगे तो इसलिए मैंने लिखा है कि इट इज लाइक अलादीन का चिराग उन्होंने घिसा द सीनियर मेंबर घिसते दिस वाज द आउटकम ड्यूरिंग बिफोर द डे ऑफ फाइनल मैच हैप्पीनेस वहां भी था कि शाहरुख खान देख रहा था कबीर खान को कोई फॉरेन सिटीजन इंडियन फ्लैग को होस्ट अप कर रहा है बिकॉज इन ऑल फॉरेन लैंड दिस इज वन ऑफ द हैप्पीनेस एक छोटी चीज है पर दिस इज बहुत एक बहुत हैप्पीनेस वाली चीज थी ये कि भाई फॉरेन लैंड पे फॉरेनर अपना इंडियन फ्लैग होस्ट कर रहा है नाउ जब आता है फाइनल डे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फाइनल मैच चल रही होती है उससे पहले उससे पहले प्रायर टू द फाइनल मैच देयर वाज अ डिनर पार्टी होस्टेड फॉर बोथ द टीम्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए जब दोनों की टीम के मेंबर्स जॉइंट होते हैं विद मीडिया एंड दे वर एंजॉयिंग दिस नाइट सो नाउ दिस वाज अ बिग टाइम जहां उनको बताना था कि कोमल और प्रीति को बताना था कि भाई आप साथ में ही खोलेंगे तो ही हम जीत पाएंगे बिकॉज दिस वाज नोन टू ऑल ऑफ देम कि भाई आप लोग एक नहीं हो यू आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम यू आर प्लेइंग फॉर योर इंडिविजुअल रोल वो यहां तक ठीक था सेमीफाइनल तक ठीक था फाइनल में ये मैच जीत नहीं सकते देन दैट वाज द पॉइंट वाज गुडली प्रेजेंटेड टू बोथ ऑफ द टीम मेंबर एंड दे रियलाइज नहीं हमको साथ में ही खेलना है एंड देन केम द फाइनल मैच जिस दिन स्ट्रेटजी और टीम वर्क ने बहुत हेल्प किया था जहां स्टार्टिंग में एक डायलॉग भी उन्होंने अच्छा दिया था शाहरुख खान ने जैसे कोई के 70 मिनट आपके पास है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता बिकॉज दैट इज ओनली अ पॉइंट यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी
ये वापस नहीं आ सकती, पर ये जो आपके पास है उसको फुल्ली एंजॉय कीजिए एंड फुल्ली आपका रोल कीजिए। एंड देन ड्यूरिंग दिस मैच, ड्यू टू हार्ड वर्क, पैशन, पेशेंस, विजन, इसके कारण वो लोग जीत सके। इसमें भी जो लास्ट पेनल्टी कॉर्नर था, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, जहां आपको बेस्ट 5 सिलेक्ट करना था। आपके पास अच्छी टीम है, यू हैड ए टीम ऑफ 16%, जहां आपके पास 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स है और आपकी 11 की टीम में, बट उसमें 5 कौन सा सिलेक्ट आपको करना है, बिकॉज दिस वाज अ क्रूशियल। एक एक पेनल्टी कॉर्नर कैन चेंज द होल गेम। अभी तक का जो पूरा जर्नी था, यू कैन बी ऑन अ सेकंड ड्यू टू दैट चीज। तो वो उनके लिए बहुत सही था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द गुड सीन वाज बिटवीन प्रीति एंड कोमल। उन्होंने स्वैप किया कि भाई ये चीज बहुत कम दिखती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि भाई यू सपोर्टेड मी, नाउ आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू। बिकॉज ये स्वैपिंग अगर रहेगा तो ऑल कैन ग्रो एंड बी एट अ पार, बट ये बहुत कम रहता है। So finally there are 5 penalty corners and then the India won. And after winning, जब लोग इंडिया वापस आते हैं, बहुत सारे जो पर्टिकुलर प्लेयर के साथ अलग अलग इन्फ्लुएंस हुआ था, जैसे जो इंडियन कैप्टन थी, उनके ससुर को नहीं अच्छा लगता था कि डोंट प्ले, बट नाउ ही वाज फीलिंग प्राउड कि हाँ भी मेरी बहू ने हैज केम आफ्टर विनिंग द मैच। फिर प्रीति had a fiancé who was a Indian, I think vice captain of the Indian cricket team, तो उसको भी इसमें रिजेक्ट किया बिकॉज ही वाज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस और सेम लेवल थिंग। सो देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स। सो मूवी में बहुत सारी चीज थी, पर ड्यू आई हैव समराइज्ड द थिंग इन स्मॉल एंड शॉर्टर वे सो दैट आई कैन गो विद द मूवी। दिस वाज अ स्टोरी आउटलाइन। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट। दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द मूवी। ये एक्चुअली मूवी कहाँ से इंस्पायर हुई थी? सो बेसिकली देयर इज अ फैक्ट ऑफ दिस के 2002 के कॉमनवेल्थ गेम से इंस्पायर हुई थी। जो राइटर है मिस्टर जयदीप शाहानी, ऐसे मैट महाराज कृष्ण कौशिक हु वाज अ कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो उनसे ही एक्सपायर होके ये मूवी लिखी थी। एंड इट वाज बीन बेस्ड ऑन दिस पर्सन। एंड द वर्ड चक दे is originated, was used by the Sikh soldier to inspire, to get up and go with. So this is the background of where Chak De came from. Moving ahead, this is a learning which I have come with from the movie. So the dialogues I have been getting. So there is a first dialogue है, मुझे स्टेट के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देता, सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता, इंडिया। सो इफ वी देयर इज अ वन टीम वन गोल। सो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन, बट दे प्ले देयर ओन रोल, बट दे फॉरगेट कि भी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं। तो वो एक रोल में अलाइन होना चाहिए। एंड इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोथ द टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट कि उनको बताना चाहिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स व्हिच आई लाइक टू हाईलाइट कि भाई इट शुड बी अ वन मिशन वन गोल। अगर इसको लेके जाना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा भाई आप कंपनी के लिए कर रहे हो और अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट इट शुड बी प्रायोरिटाइज द थिंग्स। सेकंड इज, मैंने कहा था टीम बनाने के लिए ताकत नहीं नियत चाहिए। सो दैट इज देयर शुड बी अ स्पिरिट टू become a team. It could be happen there would be diversified background the person with your team members. One has to develop that spirit. It's a role of manager or TL to develop that spirit among the team members कि भाई वो spirit उनको develop करनी पड़ेगी to make them team. The next learning is the next dialogue is वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं, सामने वाले के दिमाग पे करिए, गोल खुद हो जाएगा। That means try to match your competitor strategy. आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग आउट, उनको वो वर्कआउट कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट द काउंटर पार्ट वांट यू, ऑटोमेटिकली ही विल एक्सेप्ट व्हाट यू आर ऑफरिंग देम। दिस इज दैट वे। जो नहीं हो सकता वही तो करना है। समटाइम इट हैपेंस कि भी हमको डिफिकल्ट लगता है इसलिए हम लोग नहीं करते, बट दिस थिंग इज कि आपको जो डिफिकल्ट है वो लेना चाहिए, बट इट टू बी अप टू योर कैपेसिटी। अगर डिफिकल्ट है छोड़ दोगे तो डिफिकल्ट ही रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी आप उनको टेक नहीं कर पाओगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। चांदी को सोने में बदलना है तो कोशिश करना रहना है। सो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग कि हर टाइम शाहरुख खान क्या करता है, ही बिकॉज इंडिया लॉस्ट द हॉकी फाइनल, सो दे वर सेकंड अप,
तो उसपे उनको सिल्वर कॉइन मिलता है। तो ड्यूरिंग द होल मूवी वो कॉइन को घिसता रहता है। तो ही रिस्पॉन्डेड कि मेरे को चांदी को सोने में बदलना है। दैट मीन्स कीप योर गोल इन राइटिंग, विजिबल होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने एलएलसी के प्रीवियस सेशन में वी हैव लर्न कि उसको राइटिंग में रखो। इट कुड बी रीडेबल, अदर इट कुड बी नोट ऑन द स्क्रीन, पेपर राइटिंग, जॉट डाउन कीजिए सो दैट वन कैन नो कि मेरे को ये करना है। एंड इसको स्प्लिट डाउन कीजिए इन अ स्मॉल पार्ट सो दैट इट कैन बिकम अ होल थिंग। नेक्स्ट इज मार के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे। दिस शो द पॉजिटिवनेस, फर्म रेडीनेस ऑफ द टीम कि भी हम तो कुछ करेंगे ही, हम हार के तो आएंगे ही नहीं। सो इट हैज टू बी डेवलप, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। 70 मिनट, 70 मिनट तुम्हारे पास, तो होल डायलॉग इज अ बिगर वन। मैंने खाली उसका फर्स्ट लाइन देखा, दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी आती है तो यू आर 100%। outcome can be anything, but it has to be given your 100% to make sure because next opportunity you may get, you know not get, you don't know। तो ये 100% होगा तो you are justifying your opportunity। एंड लास्ट चीज, एक गलती तो सबको माफ होती है, सबको। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड लूजिंग अपॉर्चुनिटी विल कॉस्ट हायर। अगर एक लीड भी चली जाती है, यू डोंट नो कितना कॉस्ट करेगी। तो इसलिए मैंने लास्ट वर्ड को लिखा है सबको, यानी यू डोंट नो अगर ये गलती हो गई है तो ये वापस आपको माफी मिलेगी कि नहीं। बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन वेदर ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो कितना मेरे को कॉस्ट पड़ेगा। सो दैट आई वन हैज टू इवैल्यूएट होल सेल्फ कि अगर मेरे को कुछ मिस करना है तो व्हाट आई एम मिसिंग अगेन समथिंग। So this were the learnings which I have evaluated, and finally moving to the last part of this presentation, that is a conclusion. Chak De India. So Chak De is a wish. Already I shared, it is a wish. The first step you have to say that you can. Stop saying I wish, I will. People do not lack strength, they lack will. Nothing is possible to the man who can will. So agar will hai, then you can do all the things. That's from my end. Thank you for your time and patiently hearing. Thank you. Thank you. Wonderful. Can we give a round of applause to Pratik? बहुत बढ़िया. I think it was a very comprehensive learning that you shared, and some of the things that I also had not noticed, that I did not even know about. जैसे ये चक दे word कहाँ से आता है, where the story came from, and how you talked about was 70 minutes linked to opportunity. I had not thought about it in that context. So wonderful, very nice. Thank you. Anyone Thank else you. would like to share their? Yes, Rajat, please go ahead. First of all, Pratik, I think you must be congratulated because I have never seen such exhaustive research background detailings done by any of fellow LLC members. With due respect to everyone, you have really gone in detail, and I'm really happy the way you have put it. Thank And you. The things, I think the most inspiring part was your learnings, the learnings you derived from the final part. So I think it's fabulous. I think I just want to add my point of view, if you may allow, Pratik and Please, KD. please, please. There are two things which stand out for me as a learner and as well as a sportsman. The first is that Nair, which you said, that lady, she was pissed off because she was not getting the captain's role and she was always there. But the point is that a good leader like Shah Rukh Khan, you can call Shah Rukh Khan the leader, he turned her around in a way at a very critical point, because he knew that this is one resource which you must have. Otherwise, you are not going to go past South Korea, right? So that skill of a leadership is very, very critical, because sometimes what happens, people have ego clashes everywhere, in workplace, in sports, in everywhere, in the movies and everything. But you need to have someone who understands how to manage egos and turn it around in the common good. So this was one thing which I learned from this movie. And the second thing is that the leader himself, when you are in a comfortable position, when you are a second generation entrepreneur, or say you are running your father's business. I know none of this group actually has seen that kind of comfort. I'm talking about people who are like 50 crores, 100 crore business plus. They have a base
where they can afford to take wrong decisions, where they have people who will safeguard them. But when you come from zero, then you have a lot of onus on you to how perform. But when you come from minus, like talking about Shah Rukh Khan, he had lot to prove, not to how the team performs, but because he had a back story behind him. He was called a traitor, and so and your performance will be measured by somebody else performing on the field. So that is leadership for me, because when you can lead people to do and get things delivered at your specific task is absolutely what I call leadership. Thank you. ब्रिलियंट. हाँ, कभी कभार वो सेफ्टी नेट नहीं होता है, तभी भी द काइंड ऑफ performance that you have to give, or the leader, or the output that you have to give, and the orientation with which you probably give it is very different than अगर आपके पास वो safety net हो तो. Absolutely, I agree with you. Good, very nice. Anyone else wants to share anything? Yes, Nirav bhai. પ્રતિકે જે રીતે પિક્ચર કીધું ને, જે નેરેટ કર્યું ને, તો હું જે બુકનું અમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે ને, મારું લર્નિંગ એ બધું મિક્સ થઈ રહ્યું છે. સરસ. કે ભાઈ બધી વસ્તુ અંદર આપણે હું બોલીશ ને, તમે જોશો ને તે વસ્તુ અંદર આવતી જ જશે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ એ આવી રહી છે આખી. So Nirav bhai, you have to give little bit of credit to LLC design also, કે it was જાણી જોઈને એવું છે થોડુંક. એવું તારે પૂછવાનો તો આગલો પ્રશ્ન કે તું જાણી જોઈને કરે છે આવું. And the designer was also the same. Correct. And Nirav bhai, the learning for you is that he asked you to go first and you declined. That was H for me. પણ કદાચ એવું થયું હોત. Okay, please, Nirav bhai, please continue. કદાચ એવું થયું હોત કે જો પહેલા બોલી ગયો હોત ને, તો હું થોડો એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયો હોત, તો મેં આ પોઈન્ટ કેચઅપ બી નહીં કર્યો હોત. સરસ. તો એટલે તમારે હવે રિપીટ કરવાની જરૂર નથી કદાચ, તો યુ કેન ગીવ ધ સમરી નેક્સ્ટ ઇન when your presentation comes. Good. રશેશભાઈ, તમે કંઈ કહી રહ્યા હતા? Okay, fine. So there was one very important lesson that I got from this particular movie, and which is the importance of having a mentor or a coach in life. And this movie I had watched when I was an employee in a training company, and the boss had given me with the intention कि भाई हमको इसके ऊपर एक training session बनाना है, तो आप movie देखो. So I was watching the movie and I still have those notes. 5 मिनट का मूवी क्लिप देखूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि 5 मिनट 6 सेकंड पे ये डिस्कशन हुआ, उसमें से ये लर्निंग है. तो मेरे को 3 दिन लगा वो मूवी खत्म करने में and the learnings कोलेट करने में. But my most important lesson from that entire experience was the importance of having a mentor or a coach in life. ये जो, you know, a lot of times people like us and maybe I'd be wrong in saying in Indians in general, but we have this thinking कि जो कोच है या जो भी मेंटर है वो मेरा रियलिटी कहाँ समझ पाएगा. उसका जो रियलिटी है, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, दैट इज सो डिफरेंट देन व्हाट आई हैव. एंड that could be said same thing could be said for कबीर खान, शाहरुख खान कैरेक्टर ऑल्सो, कि भाई उसने तो मेंस हॉकी टीम में खेला है ना, उसको क्या फीमेल हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम के बारे में पता है. हाँ ठीक है, गेम सेम है, बट कितना सारा डिफरेंस है, व्हाट डज ही नो अबाउट इट. But even then he is able to come in and purely based on his ability to get the best out of individual people, he is able to make sure that the team wins. और ऐसे लोग अपने को in life are very important. So either we find them consciously, put efforts, talk to people and find these coaches and mentors and say कि भाई, you know what, I want you to be my mentor, और मैं आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आपको connect karunga and I want to have a structured discussion with you and have that kind of a relationship, because sometimes our own limitations and even our own strengths are sometimes invisible to us, and these coaches and mentors are the ones who can probably bring it out. So that was one very very important learning that I got. And today I think my learning was Pratik ne jo wo bola that 70 minute is also an opportunity. It is his entire speech is about opportunity.
And I had always looked at his speech in the context of the next 70 minutes कि वो game जो खेलने वाले हैं उस opportunity में. But what I also now realize is that is an opportunity that he was talking about himself also. उसको भी तो वो opportunity मिल रहा है ना, to prove to the country that he is not a gaddar and prove to people that he can be a good coach to a women's hockey team, to prove to the world that the Indian women hockey team is a great team. So that was an opportunity that was there for him also. So these were two learnings that I got from the movie. And thank you, Pratik, again, because a lot of things that I missed, you were able to bring out in this presentation. So brilliant. Good job for that. Good. Roderick, you want to share? Because I'm sure this movie, this would be like one of your favorite ones, no? Yes, Kelly. Hi, good evening. Hi. So actually sports का movie था तो the teamwork part in business में भी और sports में बहुत दोनों चीज relatable है. As Rajat bhai also said, as a leader you need to know which person would be able to come here to your rescue while कभी भी problem हुआ जो senior lady का था. So as a leader, having that knack of understanding people and bringing them to use or maybe utilizing their strengths whenever required is absolutely important. मेरे साथ भी कभी-कभी होता है कि there are different teams that are working और कभी कोई इमरजेंसी या सर्विस कॉल आ जाता है तो कभी मेरे शायद नीरव भाई जैसा ही है तो पानी का इश्यू है, पानी लीकेज होता है तो कहीं से भी दौड़ाना ही पड़ता है. फिर भले मेरा आदमी एंगेज्ड हो तो मुझे पता होता है कि कौन सा अभी मेरे लिए खड़ा तो रहेगा ही जगह में, तो वो आइडेंटिफाई करना भी कभी-कभी जरूरी रहता है. That is something I really liked about it. Good. Very nice. So once again, thank you very much, Pratik, for that brilliant presentation. Please share the presentation on the group also so that we can read through some of those things which we might have missed out. I think it's available with Akshay and Akshay. So I'll tell Akshay to Sure. share it. Yeah. Good. Definitely. So next up, Nirav bhai, over to you. Yes, ready. Okay, Akshay, is this okay? Can I go? Yes, this is fine. You can go ahead. And again, language is not a barrier. Hindi, Gujarati, anything, whatever you are most comfortable with. Yes. Thank you LLC ના મિત્રો અને કેડી અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ અક્ષય કે આની અંદર મને 80% જેવી મહેનત એને કરી આપી છે પ્રેઝન્ટેશનની અંદર આખી બધી જ. ઓકે, થેન્ક યુ. હું આજે તમને ધ ગ્રેટેસ્ટ સેલ્સમેન ઇન ધ વર્લ્ડ બુક પરથી મારા ટેક અવેના માટેની જાણકારી આપીશ. નેક્સ્ટ અક્ષય, નેક્સ્ટ પેજ. ધ ગ્રેટેસ્ટ સેલ્સમેન ઇન ધ વર્લ્ડ. આ એક છે ને હાફિડ કરીને બહુ મોટો સેલ્સમેન થઈ ગયો, કંઈક અરબ રણ પ્રદેશની અંદરની છે. આ બુકની અંદર એક 18 ચેપ્ટર છે. એમાં 1 થી 7 નંબરના ચેપ્ટર જે છે એ હાફિડ ધ વેલ્થ, success scale and way of thinking and approach towards his own life and to the staff એના વિશેનો ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે હું ટ્રાય કરું છું કે મારા ટેક અવે જે કંઈ બી છે કે જે હાફિદે જે પ્રિન્સિપલ્સ એની જિંદગીમાં અપનાવ્યા અને જેને કારણે ધ ગ્રેટેસ્ટ સેલ્સમેન ઇન ધ વર્લ્ડ એવું કહેવાય છે એ કયા પ્રિન્સિપલ્સ છે હું કેવી રીતે સમજ્યો છું એ તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા કોશિશ કરીશ. એમાં મૂળ મુદ્દે એના છે ને 10 પોઈન્ટ્સ હતા. એમાં એક પહેલો પોઈન્ટ એવો છે, ટુડે આઈ બિગિન અ ન્યૂ લાઈફ. આ બધું લખેલું છે તો તમે વાંચી શકશો, પણ હું થોડું અલગ રીતે કરી રહ્યો છું કે શુભ નવોદય. આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે શુભ નવોદય, એટલે દરેક સવાર એ નવી સવાર છે અને શુભ છે. એટલે આમાં એવું કહે છે કે ફેલિયર ઇઝ મેન્સ ઇનેબિલિટી ટુ રીચ હિઝ ગોલ ઇન લાઈફ વેધર ધે મે બી. As a child, I was a slave to my impulse. Now I am a slave to my habits. I will repeat. એવું કે છે કે આ જે 10 મુદ્દા છે, 10 લોજિક્સ છે, 10 પ્રિન્સિપલ્સ છે, એ હું એટલી બધી વાર એને રિપીટ કરીશ કે હું શ્વાસ લેતો હોઉં એ પ્રમાણે મારી અંદર એ વણાઈ જાય અને એઝ એન્ડ વેન જરૂર હોય તરત મને યાદ કરું કે ના કરું એ યાદ આવી જાય. નેક્સ્ટ પેજ. બીજો જે પ્રિન્સિપલ છે તે I will greet this day
with all the love in my heart. એવું કહે છે કે muscles can split a shield and even destroy life, but only the unseen power of love can open the heart of the man. મિત્રો ગાંધીજીની એક બહુ સરસ આદત હતી કે જે મારે કશેક વાંચવામાં આવેલી છે કે ગાંધીજી કોઈ બી માણસ જોડે વાત કરે ને તેની આંખમાં આંખ નાખીને એટલું કોન્સન્ટ્રેશનથી જુએ કે એમના માટે એ વાત સિવાયની દુનિયાની બીજી કોઈ પણ વાત એ વખતે મહત્વની નથી. અને ગાંધીજીનો બહુ સરસ એક ગુણ હતો કે જેને કારણે પબ્લિક જોડે બહુ સરસથી કનેક્ટ થતા હતા. નેક્સ્ટ ત્રીજો પ્રિન્સિપલ છે I will persist until I succeed. I am not a sheep waiting to prodded by my shepherd. The prize of life are at the end of the each journey, not at the beginning. It is not given to me to know how many steps are necessary in order to reach my goal. આપણા સ્વાધ્યાય પરિવારના પાંડુરંગ શાસ્ત્રી છે, એમને બહુ સરસ વાક્ય કીધેલું છે, કામ કરતો જા, હાક મારતો જા, મદદ તૈયાર છે. અક્ષય નેક્સ્ટ લીડ. ચોથો પ્રિન્સિપલ છે I am nature's greatest miracle. મિત્રો આપણે બધા જ સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિનું જાણીએ છીએ કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એક શબ્દ છે કે બ્રહ્માએ આખી દુનિયા બનાવેલી છે અને હું બ્રહ્માનો દીકરો છું. I can do anything. બીજી એક વસ્તુ આમાં એક જોવાલાયક છે કે આમાં એક સેન્ટેન્સ લખે છે I am the end product of thousands of years of evolution. Therefore, I am a better equipped in both mind and body than all the emperors and wise men of who preceded me. આપણે કહીએ છીએ કે આત્મા અમર છે અને આપણી જોડે પૂર્વજન્મના સંસ્કાર આવતા હોય છે. સમથિંગ આ એ જ વાત કરે છે કંઈક. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પાંચમો પ્રિન્સિપલ છે I will live this day as if it is my last day. I will forget yesterday, neither I will think for tomorrow. વર્તમાનમાં જીવીશ. Why I have been allowed to live. હું કેમ આજે જીવતો છું. મારા કરતા ઘણા બધા સારા માણસો, ઘણા બધા પાવરફુલ માણસો, બુદ્ધિશાળી માણસો ગઈકાલે ગુજરી ગયા છે. ભગવાન અહીંયા આગળ મને જીવતા રાખ્યો છે કારણ કે હજી મારે કશું કામ કરવાનું બાકી છે. આ એક પ્રિન્સિપલ છે. તો જેથી કરીને ટુડે I shall give myself in sacrifice and work. હું મારે જે રોલ આપવામાં આવ્યો છે પૂરું ડેડિકેશન આપીશ અને મારું કામ કરીશ. કદાચ કાલે હું હોઉં કે ના હોઉં આ કામ કરવા માટે મારી પાસે મોકો હોય કે ના હોય. અને બીજું હું આ જે કામ કરીને કોકને આપવા માંગુ છું, કોકને કંઈક બી ભેટ આપવા માંગુ છું, એ લેવા વાળો પણ ના હોઈ શકે. તો આ જ સમય છે કે આજે જ મારે કરવાનું છે. વર્તમાનમાં જીવીશ અને થેન્ક્સ લઈશ. સામેવાળો જ્યારે મારી જોડેથી કંઈક વસ્તુ સ્વીકારે છે તો સ્વીકારવાળો મળવો પણ એટલું જરૂરી છે, એટલે એનો આભારી પણ રહીશ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. છઠ્ઠો પ્રિન્સિપલ છે ટુડે I will be the master of my emotion. આપણે જોઈએ છે કે આપણું જે મન છે, આપણું માણસ છે, એ સાયકલ ઓફ મૂડ્સ છે. સવારે ઉઠીએ છીએ તો એકદમ સરસ મૂડ હોય છે, કંઈક કામે જઈએ છીએ તો ડિપ્રેશનમાં હોય છે, વધારે એન્થુઝિયાસ્ટિક હોય છે, એ બધું હોય છે. તો એની અંદર થોડાક સારા સારા વાક્યો કીધેલા છે કે જેને કારણે આપણે કોઈ મૂડમાં હોઈએ તે મૂડમાંથી કેવી રીતે ઉપર આવી શકીએ. If I feel insignificant, I will remember my goal. There will be days when I must constantly struggle against forces which would fear me down. તો હું ત્યાં આગળ બી મારા મૂડને, મારા એમને પકડી રાખીશ, વિશ્વાસ રાખીશ અને આગળ વધતો રહીશ. If I become overconfident, I will recall my failure. બનવા જોગ છે કે હું અતિ મહત્વકાંક્ષી થઈ જાઉં, હું મારી જાતને રાજા સમજું તો મારા ફેલિયરને યાદ કરીશ જેથી I will be neutral. અક્ષય નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. With this new knowledge, આ મારી પાસે જે નવી જાણકારી આવી છે તે જાણકારીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીશ તો કે I will make allowance for his anger. His મતલબ કોઈ સામેનો વ્યક્તિ. His anger and irritation of today, for he knows not the secret of controlling his mind. મને તો ખબર પડી ગઈ છે તો હું મારા માઇન્ડને કંટ્રોલ રાખીશ અને સામેવાળાનું જે મૂડ છે પ્રમાણે મારા મૂડને ચેન્જ કરીશ. સિચ્યુએશનલ લીડર. આના માટે એવું કહેવાય છે કે ભાઈ
વિચારોનું શીર્ષાસન કરવું જોઈએ. એટલે કે એકદમ હું ખુશ છું તો એકદમ નીચે લાવવા માટે દુઃખને યાદ કરું, એને વિચારોનું શીર્ષાસન કહેવાય. અને આ બધાથી છૂટવું હોય તો આપણું સનાતન ધર્મનું એક છે સ્થિત પ્રજ્ઞતા. સ્થિત પ્રજ્ઞતાનો ગુણ જો આપણે કેળવી લીધો અને અહમ બ્રહ્માસ્મીનો ગુણધર્મ જો આપણે સમજી ગયા, આઈ કેન ગેટ એનીથિંગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સાતમો પ્રિન્સિપલ છે ને એનો, I will laugh at the world. No living creature can laugh except man. My concern for this day will seem foolish 10 years later. અત્યારે જે વસ્તુ માટે હું ચિંતા કરું છું 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી જોઈશ તેવું લાગે છે કે આવી નાની અમથી વસ્તુ માટે ચિંતા કરતો હતો, તો શું કરવા મારી આજની ખુશી એવી ચિંતાઓ કરીને ગુમાવું. એના માટે આ લેખકે બહુ સરસ કીધા છે, 4 શબ્દો આપ્યા છે કે જિંદગીભર આપણે રટન કરવા જોઈએ. તે કહે છે ધીસ ઇઝ ટુ શેલ પાસ. આ જે છે તે જતું રહેશે, ખુશી તો બી જતી રહેશે, દુઃખ તો પણ જતું રહેશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એની જ અંદર આવે છે I will laugh at my failure and they will vanish in clouds of new dreams. હું દુઃખમાં પડ્યો રહીશ તો મને નવા વિચારો નહીં આવે ને એમાંથી બહાર નીકળતાનો રસ્તો નહીં મળે. I will laugh at my success and they will shrink to true color, true value. બહુ અતિ જમીન પરથી પગ ઉપર જતા રહેશે તો ગબડી પડાશે. એના માટે સ્થિત પ્રજ્ઞતા જરૂરી છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એનો 8મો પ્રિન્સિપલ છે ટુડે I will multiply my value 100-fold. આપણે ખેતરમાં ફરતા આવીશું તો જોયું જ હશે કે ભાઈ ખેડૂત જે હોય ઘઉંનો દાણો એક જમીનમાં નાખે છે અને એના પરથી એક ડૂંડું બહાર નીકળે છે, એની શાખા બહાર નીકળે છે અને એમાંથી કેટલા બધા ઘઉંના દાણા મળે છે. એ જ ઘઉંનો દાણો કોઈ બીજો વ્યક્તિ લઈને ઘંટીમાં નાખી દે છે તો એ લોટ દરી દે છે ને એ રોટલી બની જશે. તો એ ઘઉંના દાણાથી મુશ્કેલથી 1-2 માણસોએ ખાધું, પણ પેલે જે ડૂંડું બહાર નીકળ્યું એમાંથી 50-100એ ખાધું. એ બધા જ ડૂંડામાંથી નીકળેલા ઘઉંને જો જમીનમાં નાખી દઈએ તો આખા શહેરને ખવડાવી શકે છે. તો ડૂંડાના ઘઉંની પાસે એ મોકો નથી કે ક્યાં જાય સિલેક્ટ કરી શકે. એ માણસની બુદ્ધિ જ છે કે એને ક્યાં લઈ જવું છે. જો માણસની બુદ્ધિથી ઘઉંના દાણાનું આટલું બધું થઈ શકતું હોય તો માણસ પોતાની બુદ્ધિથી પોતાના વેલ્યુને ઉપર કરીને કેટલું બધું મેળવી શકે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એનો 9મો પ્રિન્સિપલ છે I will act now. એ કહે છે કે when I face closed door I will say them and knock while the failure waits outside with fear and trepidation. આમાં એક વસ્તુ બહુ સરસ એમને કીધી છે કે જે ફેલિયર માણસો છે શું કરશે એ વિચાર્યા કરશે, કોને ફોન કરું, કોને મળવા જાઉં, આમ કરવા તો તેમ કરવા જાઉં. પણ લેખક બહુ મસ્ત કહે છે કે જે મારા 10 કસ્ટમર છે ને એનું પહેલા ફોન કરી દઈશ, એમાંથી મને રસ્તો મળી જશે. જ્યારે પેલા જે ફેલિયર છે એ પ્લાન બનાયા કરશે અને બનવા જોગ છે કશું કામ જ નહીં થાય. બહુ સરસ વાક્ય એમાં કે છે the lion is hungry he eats, the eagle is thirsty he drinks, but હું મારા મૂડને મારા કમાન્ડને જાતે મારા કંટ્રોલમાં રાખીશ અને આગળ વધવા માટે કોશિશ કરીશ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એના માટે એવું કહે છે કે I will act now. આ એક્ટ નાઉ શબ્દને હું રિપીટ કરીશ again and again, each hour, each day, every day, until the word becomes as much as a habit as my breathing, and the action which follows become the instinctive as the blinks of my eyelids. આપણે આંખની પાપણોને રીતે પટપટાઈએ છે, આપણને જાણકારી નથી કે આંખની પાપણ પટપટાઈએ છે. એટલું અંદરથી I will act now મારી અંદરથી બહાર નીકળશે એટલી બધી વાર રિપીટ કરી શકે. એટલા માટે કહે છે this is the time to act, this is the place to act, I am a man and I will act now and I will get what I want. Next slide please. એના માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માટે બી કહે છે કે પ્રાર્થના આપણે શાના માટે કરવી જોઈએ. એ કહે છે ભગવાનને guide me, help me, show me the way. You have taught the lion and eagle how to hunt and prosper with teeth and claw. Teach me how to hunt with words and prosper with love, so that I may be a lion among men and eagle in the market. Assign me tasks to which others have failed,
બીજા કોઈ પણ જે નથી મેળવી શક્યું એ ટાસ્ક મને પહેલા આપતું. Yet guide me to plug the seeds of success from their failure. એવી મને દ્રષ્ટિ આપ જેથી એમના ફેલિયરમાં કયા કયા કારણો હતા હું જોઈ શકું અને એ સક્સેસ નહીં થયેલા કામને હું સક્સેસ કરી શકું. Expose me to hate so it not be a stranger yet. મને હેટ માટે મને નેગેટિવિટીમાં પહેલું મને સામનો કરવા દે મારી માટે તું એ મોકલ તો આઈ વિલ અને જોડે જોડે એ સ્ટ્રેન્જરને લવથી કે મારા મૂળથી કેવી રીતે હું ફ્રેન્ડ બનાવું એ વસ્તુ પર મને શીખવો. એ ભગવાનને પ્રાર્થના બહુ સરસ આ રીતે કરે છે. ગાઈડ મી, હેલ્પ મી, શો મી ધ વે. આ એક મારા ટેક અવે હતા. જો કોઈએ પણ આ બુક ના વાંચી હોય તો ખરેખર વાંચવા જેવી છે. 72 પાનાની બુક છે, ખરેખર વાંચવા જેવી છે. અને મેં એક સારું એ કર્યું કે આનું જે લખ્યું એ બધું મારા છોકરા જોડે મેં ટાઈપ કરાવ્યું વર્ડ ફાઇલમાં અને પછી મેં કર્યું તો એ બી એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો અને આ લાઈફમાં બુક એને વાંચવા મળી આ ઉંમરમાં. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. Superb, superb. Can we give a round of applause to Nirav bhai? I think LLC જેમ જેમ વધતું જાય છે તેમ તેમ people's presentations and learning sharing is becoming very, very good. So last time was better than previous time and this time is better. So very, very nicely presented, Nirav bhai. Anyone, if they have any shares, thoughts, comments they want to add? Or say thank you to Nirav bhai, please do that. Thank you, Nirav. Actually, it was good. मैं book read करવાની miss કરી છે. I will be honest here. Like due to March ending and thing, so now I will read the book and I will come back after your this presentation. કદાચ એપ્રિલ સુધી બી જઈશ પણ આ book હું વાંચીશ અને પછી અપડેટ આપીશ તમને. Wonderful. Yes, Rajat bhai, please. I will. No, I have nothing to add. I think Nirav bhai was excellent, and honestly speaking, I have also not read this book like Pratik because of my compulsions, but definitely it has inspired me to read this book. So, Nirav bhai, thank you for this inspiration. Good. Akshay, Thank you, you want to share something? When I had read this book, I had missed few of the points in the reading of the book. But when I started making the presentation of the same, I was inspired to read once again the book. And after reading that book, I came to know that in the initial 72 pages, I was not able to figure out the 60 pages of the book, which initially I had to do it. But one of the sentence in this whole book I liked the most was, never be upset when you fail in your life, and never you should say that you cannot succeed in life. Always remember one thing, that if you want to do it, you do it, and no matter whatever the result is, but you should always keep trying. One day will come when you will get the success. Wow, wonderful. આમાં એક Like I said, સેન્ટેન્સ હું ભૂલી ગયો બોલવાનું. Yes. એક મિનિટ, આમાં એક સેન્ટેન્સ ભૂલી ગયો બોલવાનું કે આ લેખકે બહુ સરસ કીધું છે કે કોઈ બી સ્ટ્રેન્જર કે કોઈ બી વ્યક્તિને આપણે મળવા જાઓ તો આપણે મનમાં એવું બોલો, આઈ લવ યુ. એનું એવું કેવું છે કે એ તમારી અંદરથી પછી જે ભાવના બહાર નીકળશે ને એ સામેવાળાને બહુ સારી રીતે તમે કેચ કરી શકશે વ્યક્તિને અને તમારી જોડે એસોસિએટ થશે. Good, very nice. યસ નરેન્દ્રભાઈ, તમે કંઈક કહેતા હતા. Narendra bhai, તમે mute છો, you'll have to unmute yourself. આ બુક મેં વાંચી પણ નીરવભાઈનો જે સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ હતો વિચ આઈ લાઈક ધ મોસ્ટ, એ દ્રષ્ટિ મારામાં નથી પણ એ એમનામાં હતી. એટલે આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ દેટ. એમણે આ જ કન્સેપ્ટને આ જ વસ્તુને સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચથી જોયો અને પ્રેઝન્ટ કર્યો છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ નીરવભાઈ. આ જે બુક છે, I don't know if you guys, I mean, so એમાં એવું છે કે there are 10 scrolls, બરાબર? And every scroll you have to read every day for 21 days. 30 days, sorry, 30 days. बराबर? So वो ये जो बुक है वो एक्चुअली
the way it tells you to read the book is that one scroll, you read it for 30 days every day, then you go to the next scroll, then you read it for 30 days, and then you keep doing it. The idea, I think, is so that all of these learnings get internalized, which is probably the logic. And again, this was also recommended to me when I was working in Ahmedabad for a company which had some 1,000 sales guys. और वो सब सेल्स वालों को, जो हमारा कंपनी का बॉस था, वो ये जब भी कोई सेल्स वाला ज्वाइन होता था, दिस बुक ही वुड गिफ्ट टू द सेल्समैन एंड ही वुड से कि पहले 30 डेज में आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई सेल्स का टारगेट नहीं है आपको, बट आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप ये बुक पढ़ोगे. एंड अगेन ही वुड से कि मैं टेस्ट नहीं लूंगा, मैं पूछूंगा नहीं, कुछ नहीं, मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ आपको और ये होप में कि आप पढ़ोगे. एंड आई वॉज इन HR, आई वॉज हेडिंग HR, सो मैं ऐसा सोचता था कि यार हर महीने 30-40 लोग ज्वाइन हो रहे हैं और ये बुक दे रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, हाउ डू वी सेव मनी. सो देन आई सेड आई सिट डाउन एंड रीड द बुक, एंड दैट्स व्हेयर आई फाउंड. पहले मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज वो जो पूरा प्रोसेस है कि भाई 30 दिन पढ़ो, 30 दिन, मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो कल्ट जैसा लगा. But then if you actually summarize the learnings in a very, very simplified way, what it is asking you, what it is telling you is these 10 learnings. बराबर, very, very simple 10 learnings. Form good habits. Greet every day with positivity. बराबर. Persist till you succeed. Understand that you being here in this time, in this stage of the world itself is a miracle. You guys know that theory, right? कि अगर जब दुनिया बनी, if that was 1st of January और अभी तक का टाइम अगर 30, आज हम लोग 31st December है, तो human beings only came to existence on 11th of December. You guys know this theory, right? I don't know how many of you know this. So the idea is that human beings have only been on this earth for a very, very little fraction of a time. और वो fraction में भी एक fraction में हम हैं. Like, so that itself is a miracle. So if you kind of realize that, that's when you realize कि आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, how great or how miraculous that is. Live each day like it is your last. And Rudrik, you follow stoicism. उसके अंदर यही बोलते हैं, right? This is what they say, that and सुनने में again it sounds very weird कि भाई ऐसा तो सोचते रहेंगे तो अपने आगे कैसे बढ़ेंगे. But if you live each day like it is your last day, then you will value it more. You will put in more positive efforts to it, right? You will probably tell your spouse that you love them. You will probably tell your kids that you love them, because you live as if tomorrow you will not have that opportunity to tell them. बराबर. सो अगर आपको कुछ करना है तो वो आप आज ट्राई करोगे, क्योंकि यू विल फील दैट शायद कल ना मिले ये चांस करने का. मास्टरिंग इमोशंस, ये जो लाइन है, दिस टू शैल पास, दिस इज लिंक्ड टू एब्राहम लिंकन. इट्स अ स्टोरी, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, बट उसने एक बार उसके किसी एक फ्रेंड को पूछा कि यार कोई एक ऐसा सेंटेंस बता, जब मैं बहुत खुश हूं तो मेरे को दुखी कर दे, और जब मैं बहुत दुखी हूं तो मेरे को खुश कर दे. एंड द सेंटेंस वाज दैट दिस टू शैल पास. Right? So if you're very happy, then remember that this too shall pass. If you're very sad, then remember that this too shall pass. And I think that if you're able to master, then like Nirav said, having a neutral emotion, will be able to work out of that. अगर बहुत खुश है तो एक्साइटमेंट से कुछ गलत डिसीजन ले लिया, बहुत दुखी है तो वो डिप्रेशन से कुछ गलत डिसीजन ले लिया, versus you're neutral, and that's much more better. Laugh at the world. Sorry, what? ऐसा एक कहना है ना कि बुरे समय का एक ही अच्छी चीज है कि it does not last permanently. Exactly. So master emotions, laugh at the world, multiply your value. And what an amazing example Nirav bhai said कि अपने जो उगा के 50 लोगों को खिलाए versus एक amazing. Take action now, and I think that is the essence of this book. कि good habits तो form करो, but you need to take actions to it. Otherwise, it is of no value. And then at the end, pray for guidance more than anything else. Don't pray कि मेरे को ज्यादा पैसा, भगवान मेरे को पैसा ज्यादा दे दो, भगवान मेरे को क्लाइंट ज्यादा दे दो. But pray for things that Nirav bhai said, right? कि कैसे करें, क्या करें, those are the prayers that we probably need to do. So these were my learnings from it. But Nirav bhai, I think you presented it brilliantly. Thank you very much. Again, please share that presentation in the group also. તમે જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી જે કનેક્ટ કર્યું,
I think that's something that I have also personally found useful. Right. So those of you who've not read the book, please do read the book. Like I said, it's a very, very interesting book. And एकदम simple है book. It's what 60-70 pages at the max. थोड़ा सा ऐसा awkward लगता है start करने में क्योंकि उसका language is not something that we might be used to. But once you get going, it's not a very difficult book to read. ठीक है? थोड़ा Any- ऐसा ना Thank you. monk who sold his Ferrari type. Monk who sold his Ferrari type से हाँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ज्ञान टाइप लगता है वो जब थोड़ा- बात करते तब हाँ but it's still a very nice book. Good. Any feedback for today? Anything that you would like to share? Actually, शाम तक until 5 o'clock I was saying okay what time का presentation आ रहा है and then this is conceptually in a flow, but due to the will, I will again say this word because ये चीज first heads up to Akshay, बहुत push किया है. I know Akshay has helped me a lot in this whole thing. तो अक्षय रिमाइंडर देता था and that has created my will power. Okay नहीं I will do it भले मार से कुछ भी है एक like there's a fire उस पे रॉकेट चल रहा था कि भाई इसको खत्म ही करना है. तो दिस इज नाउ फाइनली हैज बीन डन. सो दिस इज माय ऑन अ ये जो पर्सनल बुक का लर्निंग है ना टेक एक्शन बराबर दैट इज बेसिकली व्हाट यू डिड यू टुक एक्शन. Recently in one of the daily emails I had sent out an assignment saying कि आप कोई भी ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो उसको फोन करो बराबर. I don't know how many of you did. Narendra bhai did. He had then called me. He then called me and he said how that experience has been. And that's what this book also says ना कि आप करो ना यार, do it. जब वो ईगल को भूख लगती है तो वो हंटिंग करता है, जब वो शेर को प्यास लगती है तो पानी पीता है. हम ही है जो हमको जब कुछ इच्छा होती है तो हम बोलते हैं कि यार रुकना मूड होने देना फिर करते हैं. बराबर. So don't do that. Instead, if you really want to do something, do it. And maybe that if you've still not done that assignment, then maybe that's something that you can do, which is tomorrow at 1:30 in the afternoon, call any one person that you've not been in touch with since a long time. Not because कि आपका कुछ झगड़ा हो गया या जो भी, but just because of work and just because of कोई reason की वजह से contact छूट गया है, and just give them a call and say hi. मैंने ऐसे ही कॉल किया, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, just that's it. और कोई एजेंडा से कॉल मत करो और कोई एक्सपेक्टेशन से कॉल मत करो, बस दैट्स इट. ट्राई मेकिंग वन कॉल एंड देन लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. ठीक है? गुड. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग